आशिक SK कहाँ से बोल रहे हो आप? वेलकम है आपका मेरी लाइव में। आप सभी का सरिता की लाइव में वेलकम है। SK आप चले गए क्या? मैंने पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो? भैया आप लोग कोई कुछ बोल नहीं रहे हो। कोई है मेरी लाइव में? अब कुछ कोई बोलेगा नहीं तो फिर मैं कैसे बोलूँगी बताओ। कोई कमेंट तो करो, अपना नाम बताओ, कहाँ से आए हो, मतलब कहाँ से देख रहे हो। कुछ बोलोगे तभी तो मैं बोल पाऊँगी। सूरज सूरज अहिरवार MP से। अच्छा आप MP से बोल रहे हो। बेराम वर्मा। विक्रम आपकी फ़ोटो नहीं दिख रही है। अच्छा नहीं, मैं फेस लाइव नहीं कर रही हूँ, इसी वजह से नहीं दिख रही है। वैसे आवाज़ है मेरी। और बताइए कहाँ से बोल रहे हो बलराम आप? सूरज अहिरवार कहाँ से हो आप? अच्छा MP से। और बताइए। आप लोग ना जल्दी जल्दी से मेरे 100 सब्सक्राइबर करा दो, फिर मैं उस दिन से ना लाइव आना स्टार्ट करूँगी। कैसे? आप कहाँ से हो? जी हम छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ सुना ही होगा आपने। देखो इतने सारे लोग हैं, कोई लाइक भी नहीं किया है। कम से कम लाइव को लाइक तो कर दीजिए आप लोग। जिसने भी है देखा भी है। जिसने भी है देखा भी है मतलब।
अच्छा, मैं म्यूट कर दी थी, इस वज़ह से मुझे समझ ये हो गया था। आपका नेट कहाँ हो गया है? अच्छा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, अभी आ रही है। वो क्या है, मैं ही ना म्यूट कर दी थी और मेरा ही ध्यान नहीं था, मैं बोले जा रही हूँ। कैसी चल रही हो क्या? मतलब कैसी चल रही हो, मतलब कैसी हो बोल रहे हो क्या? अच्छा, मुझे इंग्लिश में लिखना आता है इसीलिए। अच्छा। कुछ गलती हो जाए तो गलत मत समझ लेना। ओके। नहीं, ऐसे अगर हम कभी-कभी ऐसे होता है ना, जब अगर हम बोल के भी लिखते हैं ना, तो उससे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक हो ही जाता है, फिर पढ़ने वाले क्या उसका दूसरा पढ़ते हैं। आप एमपी से बताएं ना, एमपी में कहाँ से? मैं जिला रायगढ़। तो रायगढ़ एमपी में पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है? मुझे लगता है रायगढ़ छत्तीसगढ़ में पड़ता है क्या? जिला रायगढ़। अच्छा, जिला रायगढ़।
कहाँ खो गई? वो आई थी बच्चे को थोड़ा शांत करवा के। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। ये आखिरी बार। अच्छा, कितने साल के हैं? मेरा छोटा बेटा अभी कितने साल का है? 8 साल का है मेरा छोटा वाला, और बड़ी वाली 13 साल की है। अच्छा, फर्स्ट डे आए हो ना मेरी लाइव में? अच्छा, जब भी ऑनलाइन है ना मुझे ऐड कर लेना। अच्छा, मैं कैसे ऐड करूँगी भाई? मैं ऐड नहीं, मेरे से नहीं होता ना इधर। जब मैं लाइव आऊँगी ना तो क्या, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा होता है ना तो नोटिफिकेशन उनके में चले जाता है। अगर आप सब्सक्राइब किए रहोगे तो क्या नोटिफिकेशन जाएगा आपके में, अगर नहीं किए रहोगे तो फिर नहीं जाएगा। पहली बार है? अच्छा, हाँ तो वही बोल रही हूँ, अगर सब्सक्राइब करके रखोगे ना तो वो नोटिफिकेशन जाता है, नहीं तो फिर नहीं जाता है। भाई और भी तो कोई लोग हैं मेरी लाइव में जो काफ़ी देर से चुपचाप सुन रहे हैं। कम से कम एक बार कमेंट करके अपना नाम ही बता दो आप लोग। आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? अच्छा, ये मैं बाद में बताऊंगी, इसको छोड़ दो। मेरा पूछो मैं क्या करती हूँ, ठीक है? मेरा पूछो मैं क्या करती हूँ, हाउस वाइफ हो क्या, जॉब करती हो क्या, ऐसा क्वेश्चन करो।
देखने वाले भी पता ही नहीं। क्या मतलब? वहाँ कुछ समझ में नहीं आया। तो देखने वाले भी पता ही नहीं, भाई इसका क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आप अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी? अच्छा, नहीं, मैंने बोला ना कि आप मेरे बारे में पूछो ना, आपको जो पूछना है। अभी पूछे आपने कितने बच्चे, मैंने बताया ना 2 बच्चे हैं, एक 10 की, एक 13 की। लाइफ इज गर्ल, हाय। और कैसी हो तुम? अच्छा, हाँ। आप काम क्या करते हो? तो मैं बता दूँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। कोई जॉब नहीं करती भाई, हाउसवाइफ हूँ मैं। इतना तो पता होगा कि किसी जॉब से कम नहीं होता है हाउसवाइफ होना, है ना? पर कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है ना कि अरे ये तो कुछ नहीं करती है, हाउसवाइफ है। आपकी आवाज़ से ऐसा लगता है नहीं, क्या बोले? आपकी आवाज़ से ऐसा लगता नहीं आती क्योंकि साल की हो। क्योंकि साल की हो मतलब यहाँ पे भी कुछ आया नहीं मुझे थोड़ा सा, क्योंकि साल की हो मतलब। अच्छा, आपकी आवाज़, आपकी उम्र कम लगती है।
आपकी आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि 22। अच्छा, 20-22 की लड़की बोल रही हो। अच्छा नहीं भाई, 20-22 की नहीं हूँ, 2 बच्चे हैं अभी मेरे। लाइफ इज गर्ल। अच्छा, इसको हंसी आ रही है देखो। ईसा मसीहा ने मेरी तारीफ कर रहा है। अच्छा, ईसा मसीहा ने मेरी तारीफ कर रहा है। अच्छा, मेरी तारीफ कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहे हैं? क्या बोल रहे हो भाई यहाँ पे आप? समझ नहीं आ रहा है। राम राम संगवारी मल्ला भाई, कौन कौन है प्लीज़ नाम बताओ अपना। अच्छा, अब तो आगे कुछ बोल ही नहीं रही हो। दी गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लाइफ इज गर्ल। देखो, इतने लोगों की वॉचिंग दिखा रही मेरी लाइव में, पर कोई कुछ बोलता ही नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं ही क्या बोलूँ अकेले। आप लोग तो कुछ बोल नहीं रहे, वैसे लगता है। अच्छा बाय, खाना खाने जा रहा हूँ। ओके ठीक है, गुड नाइट। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए लाइव।